Okay. So cost and cost objects. Fine. So many cost objects, many cost and that a management accountant works with, such as future costs, incremental costs, and opportunity costs, are not specifically recorded in accounting system. Of course, because these are the costs which are of economic nature. Okay. Like though they may not be in the accounting records or appear specifically in reports, these costs are all involved in decision making. Very important cost to be considered. So though all expenses that is expense item recognized in the accounting records are cost, not all costs are expenses. Okay. So a cost could be an expense, or it could represent payment for an asset, for example inventory purchase. So the topic which we are going to see right now focuses more on cost object than on whether the cost is accounted for or an asset, for as an asset or an expense. The cost object is only item or activity for which costs are measured. For example, a cost object could be a product, any object on which you are spending your money, a batch of like units, a customer order, a contract, a product line, a process, a department, a division, a project, real property, or even a strategic goal. So on all this you are going to spend money. These are all cost objects. So anything on which you spend money is a cost object. So it is important to properly identify the cost object, because the identification of the cost object affects cost measurements. For instance, whether a cost is considered to be a direct cost or indirect cost depends on the nature of the cost object itself. So if the cost object is company's plant, then plant manager salary is direct cost, because the plant manager salary can be traced directly to that cost object. So anything which is directly attributable to a process is a direct cost. So if the cost object is suppose company's plant, so whatever salary we pay to someone who is a plant manager is a direct cost, because he is directly working in that plant. And any other cost which is which supports the direct activity is a indirect cost. The cost which you incur for certain activities which support the direct activities, indirect cost. Okay. So if the cost object is one of the products manufactured at the plant manager salary is an indirect cost. That's what. See, if you are making some products in that factory, then whatever the salary you are paying to plant manager is an indirect cost. Okay. But in the first instance, if the cost object is so here the cost object is product, the product which you are manufacturing. So when the cost object is only plant, then manager salary is direct cost. If the cost object is product, then manager salary is indirect cost. Okay. Because the plant manager salary is not traceable directly to any one product, rather it is allocated among all the products produced. So Okay. indirect cost Yeah. can be allocated, direct cost cannot be allocated. That is what you should understand. Now the cost tracing and cost allocating. First you should identify what kind of cost it is, then you can allocate that amongst the activities. Okay. So traceability is a very important issue. So direct costs, also called traceable costs, are costs incurred specifically because of that cost object. Without that cost object, the direct cost would have not been incurred. Traceable costs may be raw materials that can be identified as a part of finished product. Direct labor required to convert the raw materials into a finished product can also be directly traced to the product. The traceability of other costs is less clear. For example, should the cost of defective units be included in the cost of goods units? Whether they should be, and if so, how much, depends on why in which management wants to use the information. Setup cost can be identified with a batch or if the batch is defined as the cost object, setup cost can be considered directly traceable. Okay, so it depends upon what kind of activity or what kind of uh, like object it is. So whatever we spend directly on that is a direct cost. Cost allocation is the process of assigning costs other than direct cost to cost objects according to a predetermined formula or allocation basis. So that will be seeing in the other units in the part 1. Other factors is in cost classification is materiality, whether it is important for you or not, relevant for you or not, technology, organizational design, contractual agreements. Cost behavior patterns, fixed and variable cost, we already have seen about them. Mixed cost or semi-variable cost, we have already discussed regarding them in the previous sessions. We've already discussed what is a fixed cost, variable cost. Many sessions we have done on that.
cost drivers are nothing but that which drives the cost, or because of which the cost may be high or more. Suppose there are one, if you book a hotel, if it is one occupant, the cost may be 1,000. If it is two occupants, it will be 1,200. If it is three occupants, it is 1,600. Because the cost increases for them, they have to serve breakfast and other things to the more other things even to more occupants. How much ever you travel, that much ever fuel you use. That is also one of the cost drivers. Okay. So other cost terms: imputed cost, postponable cost. Imputed cost is one that does not show up in the accounting records and does not entail a cash outlay, but it represents a cost that must be considered in decision making, like opportunity cost. And postponable cost is avoidable cost, which you can avoid, which like if you see that some other, if you perform other activity in which you incur less cost, you go for that. So that becomes, so the one which you are not following up right now, which we are not considering right now, is a postponable cost. Like for example, postponable cost is nothing but not right now, afterwards also it can be done. Like employee training cost maybe. So suppose the training is not that important right now, they can be trained in the future. Income tax effects are very important in decision making, because we have already seen what income tax has to be considered for every income whatever you earn. You have to see after tax. Depreciation tax shield is important concept, whereby you can claim depreciation as a deduction and you can save your taxes. Marginal analysis applications. Marginal analysis is the process of choosing between or among two or more alternatives, which is a better one, and companies make these decisions based upon which opportunities will provide more benefit. So marginal analysis is that in which product, in which particular investment you are getting more like benefits by making one additional unit in of product A or product B, which one is giving you more benefits or more profits. That is what you are seeing in the marginal analysis. Make or buy decisions is nothing but whether you have to make it or whether you have to buy it. So you will see whether making is less costly for you or buying is less costly for you. The less costly option is what you will be opting for. Okay, so let us see a question in this. So what is the maximum price to pay? Total internal production cost minus unavoidable fixed and variable cost. So total internal, whatever the production you are doing, the total cost of that minus the cost which you cannot avoid. That means which you have to spend at any cost. So nothing but the maximum price to pay. Let's see this question. Go through this question once. Isko read kariye. We'll just solve and see what is the what does this say. Now, Medina Company produces football goalposts for sale to college and professional football teams. The variable and fixed cost to produce a goalpost are as follows. So direct material, direct labor, indirect variable cost, fixed cost, selling and administrative cost total. So Butler Company, so Medina Company produces football goalpost for sale to college and professional football teams. So what they are doing, Medina Company's job is to produce football goalposts, and they sell it to the college teams, professional and college teams. And this is what is the cost they incur: variable and fixed cost to produce a goalpost. And the Butler Company has offered to supply Medina with finished goal posts that Medina would then resell under Medina name. So another company they are making right now, but another company, which is Butler Company, is saying that we will give you all the equipment, you just assemble and you just put your brand name and sell it in the market. The price for that is 490, it seems. Okay, so if Medina purchase gold post from Butler, it will continue to incur all its fixed costs. Fixed costs are there, it seems,
but Medina will, because fixed cost will be there, the location, the place where you are operating, the factory shed, the rent, all this you need to pay. But Medina will be able to eliminate half of the selling and administrative cost associated with the production and sale of its own goalposts. So selling all these things will be reduced. Okay. And the other variable cost will not be incurred because Medina company need not pay because they are not producing. So Medina must consider two important questions. Should Medina accept Butler's offer? And if not, at what price would Medina be willing to accept the offer? And what is the maximum price Medina would be willing to pay Butler? So these two things they have to see before buying from Butler or making at their own site. Medina should not accept the offer from Butler. If Medina accepts the offer, its total cost incurred will be 665 per goal post. How? The goal post they are purchasing for 490. Unavoidable cost that should continue is 120. That is a fixed cost. We already saw. And selling and administrative cost is half. So selling and administrative cost, if the Medina, because previously, like if Medina company purchases gold from Butler, it will continue to incur all fixed costs, but Medina will be able to eliminate half of the selling and administrative cost. So that is what. So 665 is what they have to still spend. So it is like $15 more than what they used to incur when they used to produce it and they used to sell it. Okay. What is the maximum price Medina would be willing to pay Butler? The maximum price Medina would be willing to pay Butler is the total cost of the product producing the goalpost internally minus the unavoidable cost that would continue if the production is outsourced. So 650 minus the unavoidable cost is the fixed cost and the selling expenses. So 475 is what maximum Medina would like to pay. Okay. So other considerations, even if Butler's offer had been acceptable from a quantitative standpoint, Medina would need to determine if it is acceptable from a qualitative standpoint also. Okay, quantitatively not, they have to think qualitatively that purchasing from Butler would be the stuff what they would be giving will be more qualitative, and will that be appealing to the customers, or people are habituated to our quality. So whether they will be complaining regarding that, and Medina is going to put its own name on that. So therefore, more before letting another company to do the manufacturing, Medina would have to evaluate other aspects such as quality of Butler's manufacturing process, reliability of its delivery, and the availability of service if necessary. So these are the things they have to consider. Okay. So like from the previous question, we are very clear that if they purchase, it's going to be costing them more. Okay. It's going to be costing them more. So here it is not acceptable. This is the maximum price they should pay, but they are demanding 490. So it is even more for them to purchase. That's what. Special order decisions. Other questions you need to try. So in a special order situation, company is asked to produce a special one-time order. Before accepting the special order, company must decide the minimum price to charge. Two factors must be considered: the direct cost of production and the level of capacity at which the company can operate, in order to determine if opportunity cost is a factor. So like they have to see the direct how much they are incurring to produce that, and and at what level they need to produce. Okay. So when you get a special order from someone, before taking that special order, you need to even see that whether you will be able to do that, and what the cost are going to incur, and what is the level of capacity at which you operate. Okay. सबसे पहले तो ये देखना होता है कि आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो पूरा काम. Now, direct or avoidable cost of production, we already know about it. Level of operating capacity, we need to see whether we are able to do that particular activity or not. हमारे पास वो capacity है क्या? Operating at less than full capacity. If the factory is operating at less than full capacity and has enough unused capacity to produce a special order, the company should accept the special order if the price is greater than the avoidable cost of production. Okay. So only the avoidable cost of production are used to determine the minimum price to be charged for order. The technically, if company can sell the product for 0.01 more than the avoidable cost of production, then the order will add the company's profits. Avoidable का मतलब क्या होता है? अगर हम
किसी चीज को अवॉइड कर सकते हैं तो हमारे लिए फायदा ही होगा ना। अनअवॉइडेबल तो हम उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, बट अवॉइडेबल इज व्हाट, हम चाहे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो उससे हमें ही फायदा होता है, दूसरे को कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है। ओके। सो अगर हम किसी चीज को अवॉइड कर सकते हैं और वो खर्चा हमें लगता ही नहीं है, तो हमारे लिए वो फायदा ही है ना। सो यस। लाइक ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, if the company's factory is operating at full capacity, when it receives a special order, the management must include opportunity cost of producing the order as a cost in determining the price to charge. In other words, because it is producing at full capacity, in order to produce a special order, company will not be able to produce something else. मतलब हम यही बनाएंगे और दूसरा कुछ नहीं बना पाएंगे, तो हमें उससे क्या नुकसान होगा, इससे क्या फायदा होगा, वो देखना पड़ेगा। मतलब इसको बनाने से अगर हमें ज्यादा फायदा है तो हम इसको बना लें, नहीं तो हम इसको छोड़ दें। So let's see the scenario whereby considered, and that question is back to back. We'll see. Very important unit. You will be given questions from this unit. Very important unit. So like Athens company produces refrigerators and microwave ovens. Okay. तो ये दोनों चीजें वो देते हैं। Athens has the following information regarding each unit produced of each product. सारा कॉस्ट आपको दिया हुआ है। तो ये रेफ्रिजरेटर बनाने में बनाए तो उनको इतने यूनिट्स बनाना है, इतना आर लगता है, इसमें इतना लगता, सेल्स प्राइस इसका इतना वेरिएबल कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा बता रहा है, इसमें कम बता रहा है। ठीक है, देखते हैं। ऑल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट विल बी अवॉइडेड इफ द यूनिट इफ इट वेर नॉट प्रोड्यूस। हाँ, अगर वो प्रोडक्शन नहीं करता तो वेरिएबल कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही रहेगा। ठीक है। सो हम प्राइस क्या पे करना है उसके लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला आई सेड, internal production cost minus the unavoidable cost will give you the cost what you need to pay for the product. Maximum price to pay, total internal production cost minus unavoidable fixed and variable cost. unavoidable बोल रहा हूं, unavoidable मतलब जो अवॉइड नहीं कर सकते आप, अवॉइडेबल मतलब वो तो आप फ्री में अवॉइड कर सकते हो। So all the variable costs will be avoided if the unit is not produced. प्रोडक्शन करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट लगता है, नहीं प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। इफ यूनिट इज नॉट प्रोड्यूस, बिकॉज फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज इन टोटल एज प्रोडक्शन वॉल्यूम चेंजेस, सो एज लॉन्ग एज द प्रोडक्शन रिमेन्स विद इन द रिलेवेंट रेंज, सिंस द फिक्स कॉस्ट विल कंटिन्यू without the change, they will simply be allocated to other units produced. Now let's see the example. तो फिक्स कॉस्ट तो आपका एलोकेट होना ही है सब में, जितने यूनिट्स आप बनाते हो। A one-time customer comes to Athens and offers to buy 200 refrigerators. If Athens is able to provide the refrigerators at lower price than its competition, okay, तो अगर तुम हमको दूसरों से कम में बेचोगे तो हम तुमसे 200 रेफ्रिजरेटर खरीद लेंगे। At this time, Athens is operating at 60% capacity and has the ability to produce these refrigerators without affecting current production. Okay. So Athens, if Athens is able to provide the refrigerators at a lower price than its competition, तो वो लोग क्या है, उनसे 200 रेफ्रिजरेटर्स लेंगे। At this time, Athens is operating at 60% capacity and has the ability to produce these refrigerators without affecting current production. मतलब वो अपने कैपेसिटी का 60% ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो आराम से उसके पास स्कोप है कि वो ये 200 रेफ्रिजरेटर बना सके। Minimum price that Athens should charge for 200 refrigerators is $100.01, or the amount of the variable cost that will be incurred to produce this order plus 0.01, यानी कितना चार्ज करना चाहिए उसको। तो the minimum price that Athens should charge for 200 refrigerators is $100.01, or the amount of variable cost that will be incurred to produce this order, okay, प्लस 0.01, यानी वेरिएबल कॉस्ट को प्लस इतना ऐड कर रहा है वो।
If the price were only 100, then Athens would be indifferent between producing the refrigerators or not producing them, because it would receive no additional contribution from their sale. ठीक है, तो अगर 100 ही मिलता है तो उसको लाइक सेल करना, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द प्राइस वाज ओनली 100, then Athens would be indifferent between producing the refrigerator not producing them, because वो प्रोड्यूस करे तो भी उसको उतना ही खर्चा पड़ रहा है, एंड इट वुड रिसीव नो एडिशनल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मिनिमम प्राइस जो एथेंस को चार्ज करना है, विच इज़ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस द अनअवॉइडेबल कॉस्ट, वो है 100.01। या आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि प्रोडक्शन कर रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट तो उसको लगना ही लगना है, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट विल बी देयर, दैट इज दे आर प्रोड्यूसिंग। So like amount of variable cost that will be incurred to produce the order plus some extra amount they are charging. So if the price were only 100, अगर वो 100 पे ही restrict कर देता, ठीक है, 100 पे कर देता, then Athens would be indifferent between producing the refrigerators or not producing them, because it would receive no additional contribution from the sale। मतलब contribution नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है? अगर हमें कुछ बनाने से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आएगा तो हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा, फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा तो ही प्रॉफिट होगा, फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होने वाला है? इम्पॉसिबल। मतलब अगर वो 100 का 100 ही चार्ज कर लेना तो कोई फायदा नहीं है उसको, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड हियर। उसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा अपने वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बस उतनी सी बात है। नेक्स्ट सम, अ वन टाइम कस्टमर। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है, ठीक है। एंड लाइक एथेंस इज ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी, 60% नहीं है, अब 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का केस आएगा। एंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दीज 200 रेफ्रिजरेटर्स इट वुड नीड टू प्रोड्यूस 300 माइक्रोवेव्स। So a one-time customer comes to Athens and offers to buy 200 refrigerators if Athens can provide these refrigerators at a lower price than its competition, market से कम है। At this time Athens is operating at 100% capacity, and in order to produce these 200 refrigerators it would need to not produce 300 microwaves। यानी अगर ये बनाना है तो 300 माइक्रोवेव का प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। In this case, the minimum price that Athens must charge will include the variable cost of the production of the refrigerators and also the contribution that will be lost by not producing and selling the 300 microwaves। यानी एक तो जितना भी उसको वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्शन करने के लिए वो तो चार्ज करना ही पड़ेगा उसको, वो क्यों अपने जेब से भरेगा। दूसरा, जो भी मतलब ये माइक्रोवेव नहीं बनाने से जो उसको कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, उसको बना के बेचने से जो भी कंट्रीब्यूशन का नुकसान हो रहा है वो भी चार्ज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। सो द वेरिएबल कॉस्ट 100 है, कंट्रीब्यूशन पर माइक्रोवेव 125 है, एंड 300 माइक्रोवेव प्रोड्यूस करना है तो पूरा का पूरा टोटल कंट्रीब्यूशन उसका जो नुकसान हो रहा है वो 37,500 का हो रहा है। तो रेवेन्यू 200 रेफ्रिजरेटर से कितना आ रहा है? तो द रेवेन्यू फ्रॉम 200 रेफ्रिजरेटर्स इन स्पेशल ऑर्डर विल नीड टू कवर दिस लॉस। So dividing this in 200 refrigerators 187.50 per refrigerator। हाँ, तो ये 187.50 तो उसको वसूलना ही वसूलना है, और लाइक वेरिएबल कॉस्ट उसका 100 है, ठीक है ना, तो वो भी उसको किसी भी हाल में चाहिए, और इसके ऊपर वो 0.01 एक्स्ट्रा ऐड करके बेच सकता है। मतलब वो मिनिमम प्राइस की बात कर रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम इतना तो उसे मिलना चाहिए बॉस। 0.01 तो ऐड करना पड़ेगा उसको वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और इनका लाइक कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन या लॉस्ट कंट्रीब्यूशन एंड 0.01। So Athens will need to charge at least 287.51 per refrigerator. First contribution. Hello. Yes. Hello. Yes. आवाज हाँ, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं सर, अब आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, आ रही है ना? I got some call actually, so maybe बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा।
सो लाइक जो कंट्रीब्यूशन उसको नुकसान हो रहा था वो फॉरगॉन कंट्रीब्यूशन में आना चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट भी आना चाहिए, प्लस उसके ऊपर 0.01 मिनिमम प्राइस. सो एथेंस विल नीड टू चार्ज एटलीस्ट 287.51 per refrigerator in order to accept this order. अब currently Athens has this much of total production, total contribution, sorry. So contribution कैसे प्रीवियस सेल्स क्वेश्चन, माइनस हाँ विश 200 and 125, यानी अगर वो रेफ्रिजरेटर माइक्रोवेव बनाता है तो so 500 into 200 plus 500 into 125, and if it were to set the price at this for the new refrigerator order and sell 300 fewer microwaves, यानी 300 माइक्रोवेव हटा के अगर वो 200 रेफ्रिजरेटर बेचे तो उसका कंट्रीब्यूशन would exactly be 162,500. कैसे? रेफ्रिजरेटर्स का इतना, रिमेनिंग माइक्रोवेव्स इतना, ठीक है. तो एक्चुअली में ये लोग कितना बनाते हैं? 500 और 500, लेकिन अब वो 300 नहीं बनाएंगे और 200 ही बनाएंगे अपने पास, क्योंकि वो 300 का कम करके रेफ्रिजरेटर में एडअप कर रहे हैं, ठीक है. तो अब वो 200 माइक्रोवेव बनाएंगे, 500 पहले से बनाते थे रेफ्रिजरेटर, अभी नया ऑर्डर 200 रेफ्रिजरेटर का भी वो भी ले रहे हैं. तो पूरा मिलके उनको जो लग रहा है वो ये है उनका, लाइक 1,62,500. वी आर स्पीकिंग ओनली अबाउट दी कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, सो कॉन्ट्रीब्यूशन में आपका क्या होता है, लाइक एस माइनस वी इज सी, ठीक है. तो इनका ये 187.50 क्या था? फॉरगॉन लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था ना, तो वो लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ही हमको अभी वापस रिगेन हो जाएगा, ठीक है ना. हमें करना पड़ेगा वो रिगेन. तो ये यस इनका यस कंट्रीब्यूशन बनता है. तो अगर लेस देन इतना 287.50 करते हैं तो सही नहीं है. Like if Athens were to sell less than this, its contribution would be less than what we are showing. So उसको उससे ज्यादा में ही बेचना पड़ेगा. Now, sell or process further decisions. यानी या तो आप बेचो, यानी क्वेश्चंस आप, कर लेना है हाँ सर, जो क्वेश्चंस अभी गए आप पेजेस में. हाँ सर वो करना ना सर, वो कॉन्सेप्ट लेके वीडियो क्वेश्चंस समझ के वो आपको करना है. ओके 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 फाइन. ये यही तो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं करने के लिए, दो दो एक एक करके. आपको कोई डाउट है तो यू कैन कम टुमारो एंड यू कैन लाइक आस्क मी दिस. अभी हाँ हम लोग को सिलेबस खत्म करना है, सो मेरा टारगेट है ये जल्दी खत्म हो जाए 1 वीक के अंदर अंदर. सो आई विल बी स्टार्टिंग रिवीजन क्लासेस. वो रिवीजन क्लासेस में हम ये क्वेश्चंस लेके बैठ सकते हैं सेलेक्ट करके. ओके नाउ सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजंस. सेल या तो आप बीच में ही बेच दो, यानी कोई प्रोडक्ट बना है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको पूरे एंड तक मत लेके जाओ. यानी उसको मतलब अगर आपको लगता है कि ये कुछ, जैसे भी आप जैगरी होती है, जैगरी का लाइक अगर आप प्योर जैगरी अगर कभी देखोगे, सो यू वोंट ईट दैट जैगरी, यू नो. पूरा ब्लैक कलर में रहेगा, मतलब डार्क ब्राउन एंड ब्लैकिश, डार्क ब्राउन समझ लीजिए, और मीठा ही रहेगा. बट वो ह्यूमन बींग्स हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते उसको, वो अच्छा नहीं है, कंज्यूमेबल नहीं है, समझ लो आप. तो इसको चाहे तो हम बेच सकते हैं किसी को भी, उन लोग को बेच सकते हैं जो फैक्ट्री वाले हैं, कंपनी वाले हैं, जिनको रॉ मेटेरियल चाहिए या कैटल को चाहिए, मतलब खिलाना वगैरह. लेकिन इसी डार्क ब्राउन जो जैगरी होता है उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर वो येलोइश हो जाता है, जो हम मार्केट से खरीदते हैं. तो ये या तो आप इसको इधर ही बेच दो या तो उसको फर्दर प्रोसेस करके बेच दो, आपकी मर्जी. आपको सेल करना है या फर्दर प्रोसेस करना है, ये डिसीजन लेना है. दोनों में जिसमें फायदा होगा हम वही करेंगे, कॉमन सेंस है. सो कंपनी में फेस ए चॉइस बिटवीन सेलिंग ए प्रोडक्ट as is or processing it further, presumably in order to sell it for a higher price, also known as sell or process further decision. The decision to sell or process further should be based on incremental operating income that is attainable beyond the as is sale point. यानी अगर आपको ज़्यादा इनकम आता है तो as is sale point से ज़्यादा आता है तो आप प्रोसेस करके बेच दो, नहीं आता है तो मत करो.
This kind of situation may be encountered when dealing with joint production process or with obsolete inventory. यानी इन्वेंट्री है, अगर हम उसको पूरा फर्दर प्रोसेस अगर हम चाहें तो पूरा का पूरा दो टाइप के काम कर सकते हैं. फर्नीचर बनाने का काम है तो हम हैंडल, वो फर्नीचर का जो लेग होता है, वो सब पार्ट्स को ऐसे ही बेच सकते हैं किसी को, भाई हमको इसको पूरा प्रोसेस नहीं करना है, हम ये सब तुमको भेज रहे हैं, तुम बना के बेच लो. या तो वो बिजनेस कर सकते हैं, या तो हम ये भी बना के उन सबको असेंबल करके भी बेच सकते हैं, अपनी मर्जी. Joint production process. A joint production process is one production process and its associated cost that is more than one product. Joint production यानी crude oil को ले लो. Crude oil is processed into these many types of things: gasoline, diesel, fuel, jet fuel, heating fuel, motor oils, kerosene, and various petrochemicals. Joint production costs are costs that are shared by products produced by the joint production process. When a joint production process has joint costs, the split off point is the point in the production process where the various products become individually identifiable. यानी सब कुछ बना रहे हो तो 100 रुपए में बन रहा है जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट. यानी अगर उसको ब्रेक करोगे तो एक चीज केरोसिन बनाने का 10 रुपए लग रहा, लाइक जेट फ्यूल बनाने का 30 रुपीज लग रहा. ऐसा इसको अपन लोग यहाँ पर इसको ब्रेक भी कर सकते हैं. ठीक है. तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आप उसको अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनका कॉस्ट अलग कर सकते हो. कॉस्ट इंकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट और जॉइंट कॉस्ट, यानी यहां तक जो भी कॉस्ट आपने पे किया वो आपका जॉइंट कॉस्ट है. इसके बाद आप उनको अलग कर रहे हो तो वो जॉइंट कॉस्ट नहीं होता है. सो दे आर कॉल्ड सेपरेबल प्रोसेसिंग कॉस्ट्स. ठीक है. A product of a joint manufacturing process may or may not be able to be sold at the split off point. अगर आप उसको जहाँ वहाँ का वहाँ नहीं बेच सकते तो आपको उसको अलग करके ही बेचना पड़ेगा. And when joint costs have already been incurred, the decision of whether or not to sell at split off point should not include any consideration of the joint cost or the portion of joint cost already allocated to the individual products because those are sunk cost. यानी जब अब वो joint cost तो sunk cost है, वहां तक तो जो खर्चा लगना है आपका वो लगना ही है, वो आपको कुछ भी करके आपको खर्च करना ही पड़ेगा. Only incremental revenues and costs are relevant factors. यानी like the increased revenue from further processing should be balanced against the increased cost of further processing. यानी अब यहाँ तक तो आपको 100 रुपए तो खर्च करना ही पड़ेगा. यहाँ से जो ब्रेकअप ले रहे हैं वो आप ब्रेकअप लेके आप ब्रेकअप तभी लो जब आप इसको फर्दर प्रोसेस करके अगर आपको 2 रुपए लग रहा है तो उसको फिर बेचेंगे तो एक्स्ट्रा 5 रुपए आपको मिलना. यानी ये कॉस्ट आपका रिकवर होना तब जाके आप उसको फर्दर प्रोसेस करो. जब प्रोसेसिंग कॉस्ट ही ना निकलेगा तो फिर आपको फायदा नहीं है. यानी आपका रेवेन्यू ऐसा आना चाहिए, वो प्रोसेसिंग करने से आपको स्कोप दिखना कि मेरे को जो रेवेन्यू आएगा उसमें मेरा प्रोसेसिंग कॉस्ट कवर हो जाएगा. then only it is wise for you to increase your costs. ऑब्सोलेट इन्वेंट्री मतलब खराब हो गया, स्क्रैप हो गया, उसको ठीक करना है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करने का जो खर्चा लगता है वो भी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कॉस्ट में आता है हमको. सेलर ये मतलब जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस में आता है. चलो रीड करो क्वेश्चन, विल सी हाउ टू लाइक इन फॉर दिस. ओके. बाबू, you had a call now, मेरे.
Now, CCC has 10 obsolete computers in the inventory. So CCC purchased the computers 4 years ago. तो 10 बेकार कंप्यूटर्स पड़े हुए इनके पास, एंड ये कंप्यूटर्स 4 साल पहले कर दें at a cost of 800 but has never been able to sell them. Company has a consumer who would buy them for 175 each if CCC upgrades them. Otherwise, CCC could sell them to another customer as is for 100 each. जैसा कंडीशन में वैसा ही बेचेंगे तो $100 आएगा, अपग्रेड करके बेचेंगे तो 175 आएगा. अपग्रेड करके बेचने में कुछ फ़ायदा है तो अपग्रेड करो, नहीं तो एज इट इज़ जो है उसमें बेच दो अगर फ़ायदा लग रहा तो. यानी अपग्रेड करके बेचने से जो फ़ायदा आपको आ रहा, एज इज़ बेचने से जो फ़ायदा आपको आ रहा, कंपेयर कर लो बेटर किस में है, उस वो डिसीजन ले लो. सो अब यहाँ पर देखो क्या क्या हो रहा है, उनको अपग्रेड करने से क्या क्या खर्चा पड़ता है. सो कॉस्ट ऑफ अपग्रेड वुड बी $100 पर कंप्यूटर इंक्लूडिंग लेबर. CCC's tax rate is 40%. Would the company be better off selling the computers now for $100 each or upgrading them and selling them for 175 each? देखते हैं how much is the difference. Revenue अगर एज इज बेचते हैं तो इतना आता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास 10 कंप्यूटर्स हैं, और अगर 175 में बेचते तो इतना आता है, तो ज़्यादा आ रहा है. कॉस्ट ऑफ अपग्रेड यहाँ कुछ नहीं यहाँ पर है, तो आपका लाइक कैश फ्लो फॉर सेल, अपग्रेड करके बेचना है आपको, तो इतना आपको मिलेगा. अगर मतलब आप नेट देखते हैं तो मतलब इतना आपको पैसा आ गया, 1750 आपके जेब में आ गया, उसमें से 1000 आपने खर्च कर दिया, 750 अभी आपके पास बचा हुआ है, यहाँ 1000 बचा हुआ है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ठीक है, दोनों केस में सेम है. और ये आपका टैक्सेबल इनकम आ गया. टैक्स निकालने के बाद इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें कम है, ठीक है ना. तो द tax loss is relevant to decision only because it will shelter other income from tax. The loss will be used to offset other profit and will reduce the total tax liability of company. After tax consideration, CCC would be better off selling the computer now because उसको फायदा हो रहा है. That's it. तो ये टैक्स बेनिफिट ये इसलिए ले रहा है सर कि आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, अगर सबसे टैक्स का बेनिफिट अगर बी में ज्यादा होता See, है. income, the tax loss is relevant to decision only because it will shelter other income from tax. मतलब अगर आपको कुछ अदर इनकम्स, जब भी आपको लगने का है खर्चा, टैक्स बेनिफिट कम करेगा उसको, ठीक है. सो लॉस विल बी यूज्ड टू ऑफसेट अदर प्रॉफिट एंड विल रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. अब ये टैक्स बेनिफिट से तो आपको टैक्स लायबिलिटी कम ही होता है ना. टैक्स लायबिलिटी आपका कम क्यों होता है टैक्स बेनिफिट से? ये ऐसे खर्चे होते हैं जिससे आपको जो टैक्स लगना है, कम हो कुछ जाता खर्चे है, ऐसे शेल्टर. होते हैं जिस पे आप एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हो, ठीक है. यानी वो लोग उसके ऊपर उसको फिर आपको कंसिडर नहीं करते हैं आपके टैक्स कैलकुलेशन में. तो आपको क्या होता है, लाइक उसको हटाने के बाद सपोज अब डिप्रिसिएशन है, 1 लाख का प्रॉफिट आया, डिप्रिसिएशन सपोज मैं क्लेम कर रहा हूँ 20,000, 80,000 पे टैक्स पे करूँगा, नहीं है तो फिर 1 लाख पे करूँगा. तो इनसे आपको क्या होगा, आपका टैक्स कम होगा, है ना. यस यस. तो टैक्स कम होगा तो वो आपके लिए सेविंग्स ही होगा ना. सो टैक्स हाँ. लॉस इज relevant to the decision only because it will shelter other income from tax. So the loss will be used to offset other, मतलब जो भी लॉस आएगा आपको उससे दूसरे प्रॉफिट्स आपके कम हो जाएंगे, एंड ओके उससे आपको टैक्स लायबिलिटी कम ही होगा, है ना. ओके. तो इन जनरल क्या है, ये आपका इनकम है टैक्सेबल. यहाँ पर आपका टैक्स बेनिफिट इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ ज़्यादा मिल रहा है ना. ये यहाँ आपको टैक्स बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, फिर भी वो लेने के बाद भी आपको लॉस ही है इसमें अपग्रेड करने में. इसमें देखते हैं लाइक कोई कस्टमर ने परचेस करने का एंड कुड सेल एट 175. अच्छा, ये मतलब कंप्यूटर को हटा के कुछ नया लाना चाहते हैं. सिंस कंप्यूटर कंटेंट टॉक्सिक कंपोनेंट्स दे वुड नीड टू बी सेंट टू रिसाइकलिंग सेंटर. इतना चार्जेस लगेगा. फॉर एग्जांपल द चॉइस इज बिटवीन अपग्रेडिंग एंड सेलिंग. द कंप्यूटर्स आर पेइंग अ रिसाइकलर टू एक्सेप्ट देम, व्हिच इज द बेटर चॉइस फॉर CCC.
रिसाइकिल करना है या अपग्रेड करके सेल करना है। रिसाइकिल करने से रेवेन्यू को तो कुछ नहीं आएगा, कॉस्ट तो लगेगा आपको $15, $15। और कैश फ्लो फ्रॉम सेल, सेल ही नहीं है यहाँ पर, ये आपका कॉस्ट है। ये टैक्सेबल इनकम और लॉस, ये तो लॉस ही चल रहा है, कॉस्ट पे चल रहा है मामला। बेनिफिट मिल रहा है आपको, आपको टैक्स रिफंड होता ना लॉस आए तो, हाँ आप सर। रिफंड क्लेम करते एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं तो। एंड इधर पर आपको 3650, तो आपको लाइक अपग्रेड करके सेल करना बेटर है। यहाँ तो आपको एक्स्ट्रा इतने खर्च करने पड़ रहे हैं। यहाँ आपको, इसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है ना, इसमें आपको कॉस्ट ही कॉस्ट लग रहा है। एम आई राइट? यस। इधर आपको इतना आया, इसमें से आपने लाइक 850 आपने खर्च किया, ठीक है। तो लाइक आपको 1750 और एडिशनल कॉस्ट, ये आपका एडिशनल कॉस्ट है। तो बी माइनस है यहाँ पर 750 आना ना 850 आना, ओके डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, फाइन फाइन। एंड यहाँ पर आपको लाइक इधर 750 का आपको प्रॉफिट हो रहा, फिर कॉस्ट आप करें तो आपको टैक्स निकाले तो एट द एंड आपको यहाँ पर अपग्रेड एंड सेल कर दो, आपके पास नेट कैश इतना बच रहा, वहाँ कम बच रहा, तो आपको फ़ायदा इसमें चाहिए। जिसमें हमको ज़्यादा कैश बचेगा वही फ़ायदेमंद चीज़ है। डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है? अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है जिसमें लॉस हो रहा आपको, या अब वो आपको उसमें से हटना है वो पूरे के पूरे कम प्रोजेक्ट से, या आपको कुछ लाइबिलिटी लाइक वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे रहा और कोई लाइबिलिटी आपको सेट ऑफ करना है, तो आप बेच के उसको आपका दूसरे काम में लगा लो, या एक दूसरी जगह एक्सपेंड कर लो, नए प्रोजेक्ट में लगा लो, या कोई लाइबिलिटी है तो उसको निकाल दो। So in यस। making a decision to disinvest that involves termination, a company must follow 3 steps. Identify all unavoidable fixed costs. जो अनअवॉइडेबल हैं, यानी जिनको खर्च करना ही पड़ेगा आपको। डिसइन्वेस्टमेंट भी खर्च करना पड़ता है आपको, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच गए। वो डिसमेंटलिंग करना, वो सब साइट को निकाल के दूसरे को देना, या जो भी आपको बेचने के लिए भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है हर चीज़ का, ठीक है। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट निकालो, अनअवॉइडेबल वेरिएबल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट मिलता है आपको। ये खर्चा आपको कितना लग रहा है वो देखो, और डिसइन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट कितना आ रहा देखो, और उस डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आपको कॉस्ट जो आप इंकर कर रहे हैं वो देखो, ठीक है। ये सब देखो, अगर इन सबको सेट निकालने के बाद भी अगर आपको बेनिफिट है तो डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो छोड़ दो। इसके ऊपर कोई ओके। क्वेश्चन तो दिया नहीं इसने, मुझे देखना पड़ेगा अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक करते हैं सर, आज करिए यहाँ तक आप, कल फिर 1 आवर का क्लास लेंगे। कल जल्दी हो जाता क्योंकि डिमांड सप्लाई वही इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है, फटाफट ख़त्म कर सकते हैं, ईजी रहता। और ज़्यादा ये मेजर चंक ऑफ द क्लास मेजर ले लेंगे पूरा, एटलीस्ट यहाँ तक करें तो फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहता। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और 2 सेशंस होना उसके लिए, ठीक है। यानी मोर 3 क्लासेस टू फिनिश दिस। रिस्क मैनेजमेंट तो हो गया अपना, आई विल शेयर द वीडियोस अगर नहीं है तो, ओके। हैव अ नाइस डे।